Hello and welcome everybody for our next class in the business studies. And in this topic, we are going to deal about the levels of management. मतलब मैनेजमेंट कितने लेवल या कितने स्तर पे मैनेजमेंट फंक्शन को पूरा किया जाता है, उसके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे. देन फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट. द फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज द ब्रेन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. कहने का ये मतलब है कि जो फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसी भी संस्था का ब्रेन होता है, सोचता है, समझता है, संस्था में क्या नीति, क्या पॉलिसी बननी चाहिए, सबके बारे में ध्यान देता है और उसी के अनुरूप संस्था के नीतियों को बनाता है ताकि संस्था प्रतिस्पर्धा में टिक सके और मार्केट को वो स्टडी करते हैं. देयरफॉर दे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी द मार्केट एंड अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंसेप्ट दे develop their ideas, their logistics, their capabilities and others. Then in this group of management, it comprises of the following. The first level comprises of the topmost authorities or person in the organization. They consist of the CEO, Chief Executive Officer, MD, Vice President and President. These people, they are the main policy maker and they are acting as the brain of the organization. And they do what type of work? Their function. Then we note the functions. The first function of them is integration of diverse elements. Integration means what? They make a coordination between various elements for the organization. Maybe government authorities for taking permission, listing of shares and other securities in the market to obtain money, negotiating with the finance organization like banks and others for money matters. Then they provide for the raw material, machinery, technical know-how and others. Means they are the key factors for deciding the policies of the organization, and they try to interrelate within the various components to make the workplace a better and to get the top most of the output of that organization. Means they derive policies such that they can make most of the productiveness of the organization and make it a place where the fruitful ideas can be developed and nurtured. Then the next work, they coordinate between various departments. Means they coordinate between various department, समन्वय करते हैं और विभिन्न डिपार्टमेंट का जो वर्क है उसको तालमेल बैठाते हैं ताकि वर्क का जो आउटपुट हो सबसे बेस्ट हो सके. नेक्स्ट इज दिस पीपुल प्लान स्ट्रेटेजी फॉर द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस इन द मार्केट. कहने का मतलब कि ब्रेन है, पहले ही बता चुके हैं कि ब्रेन की तरह काम करते हैं और स्ट्रेटेजी बनाते हैं, पॉलिसी निर्धारित करते हैं किस तरह से संस्था मार्केट में या कॉम्पिटिशन में टिक पाएगी दूसरे संस्था की तुलना में. देयरफॉर दे आर द मेन स्ट्रेटेजी मेकर्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस. देन वी कम टू द मिडिल लेवल. In the middle level of management, they serve as a link between the top level and the lower level. Means they serve as a link.
Okay. Then in this level, the persons are divisional heads. Then production manager, etc. So these people, they are in charge of a particular department or division, maybe accounts manager, system manager, production manager, sales manager, purchase, then inventory. Then these people, they are the owners, or they are the key factor in any department. Means in that department is responsible, and they are responsible for the work of their department. So these people are acting as a link between the top level and the lower level. Then they also work for assigning duties to the lower level. मतलब ये जो लोअर लेवल पे जो लोग हैं उनको ड्यूटीज असाइन करते हैं, और ड्यूटीज असाइन करने के बाद उनको मोटिवेट भी करते हैं. मोटिवेट मतलब उनको प्रोत्साहित करते हैं ताकि वे वर्क को सबसे अच्छे तरीके से करें और आउटपुट बेस्ट हो. Therefore, they act as a middleman, and they coordinate between various lower level persons or units to make the work do in a better way. Then we are coming to the lower level. Supervisory or optional management means these are the person at the lower level. They may include supervisors, foreman, etc. Means these people are in direct touch with the workers or the person who are doing the job at the site. Their main purpose is to convey the message of the upper level to these workers, check their work, inspect their work, and make then the clarification about the goals, the quality and standard and others. तो कहने का मतलब ये है कि उनका वर्क को चेक करते हैं, क्वालिटी की जांच करते हैं, उनको मदद करते हैं उनके काम में, काम कैसे होना चाहिए, काम सही समय से पूरा होना चाहिए. मतलब उनको वो लोग निरीक्षण करते हैं, एंड दे आर द सुपरवाइजर्स एंड द फोरमैन. These people, they serve as a link between the worker and the middle level of management, because they convey the message from the workers to the middle level about the ground reality. तो ये जो जमीनी सच्चाई है, हकीकत है, उसके बारे में टॉप लेवल और मिडिल लेवल को ये सूचना देते हैं, और इस तरह संस्था में कोऑर्डिनेशन के तहत काम होता है. एंड इफ ऑल दिस थ्री लेवल्स यूनाइट टुगेदर एंड डू वर्क इन a systematic way, then the work done output will be the best, and the organization can achieve its best result and output very easily. Thank you very much for listening to me. Have a good day.